प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि ये जो क्लोज्ड इंटरवल है इट हैज़ अ फाइनाइट कवर बिकॉज इट्स कम्पैक्ट. Every cover can be reduced to a finite subcover. This set has a finite cover. It's contained in union C2 union C I B I runs from 1 to k. Okay. तो फिर हमने कहा कि हम इनको ऑर्डर में रखें क्योंकि इन एलिमेंट्स को हम ऑर्डर में लिखेंगे. सो अगर हम इनमें ऑर्डर लिखेंगे ना, पहले C1 B1 इसके बाद C2 B2 देन फाइनली CK BK, सो इट मीन्स दैट दिस B minus epsilon is less or equal to BK. It's less or equal to BK. It cannot be greater than BK. फिर हमने B's जो है ना BI's आपके पास इन पर कंडीशंस दी थी. अगर B1 होगा ग्रेटर देन B minus epsilon, फिर हमें उससे कुछ मिला था. इस तरह से अगर B2 होगा ग्रेटर देन B minus epsilon, हमने इसको कंटिन्यू किया. फिर मगर किसी जगह कम से कम तो रिवर्स इनइक्वालिटी आ जाएगी. कोई स्टेज होगा जहाँ पर रिवर्स इनइक्वालिटी आ जाएगी, या तो वो k स्टेज खुद होगी बिकॉज BK इज द लास्ट पॉइंट है ना. BK ओबियसली इट्स ग्रेटर और इक्वल टू B minus epsilon. ये ऐसा है आपके पास. दिस इज B, दिस इज B minus epsilon एंड दिस सॉरी इट्स A to B minus epsilon. Okay, A to B minus epsilon. It's A and this one is B minus epsilon. ये क्लोज इंटरवल है और इसको कवर करा ये C1 B1. पहला पॉइंट मैंने लिया तो C1 यहाँ बाहर होगा कोई C1 B1 के C1 B1. फिर इसके बाद है C2 B2, कोई पॉइंट है यहाँ पर C2 B2. तो फाइनली आपके पास जो आता है वो आता है CK BK. तो BK मस्ट भी या तो ये B minus epsilon के बराबर होगा या इसके बाहर होगा BK. तो CK BK हमने क्योंकि ऑर्डर में इंटरवल्स को रखा. ओके, सो दिस एटलीस्ट BK इज ग्रेटर इक्वल टू B minus epsilon. आपको ये बात समझ आ रही है? तो अगर B1 होगा भी ग्रेटर देन B1 अगर होगा भी लेस देन B2 अगर होगा भी लेस देन B minus epsilon, मगर कोई ना कोई स्टेज तो होगी से एट M स्टेज जहां पर रिवर्स इनइक्वालिटी आ जाएगी. और ये M किसी टाइम ये के भी हो सकता है. इट में भी BK BM में भी BK. और कभी ऐसा भी हो सकता है कि CK BK से पहला कोई इंटरवल है जो इससे बाहर जा रहा है. ये भी हो सकता है क्योंकि ये इसको एक्चुअली कंटेन कर बिकॉज दिस यूनियन कंटेन्स A B minus epsilon. तो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर CK minus 1 BK minus 1 होगा और इसके बाद होगा CK BK, इसके बाद होगा CK BK. ये भी हो सकता है. सो दिस M is less or equal to K. M is less or equal to K. तो वही हमने लिखा. we continue this process and we obtain the intervals, open intervals C1 B1 C2 B2 and CM BM with the condition that 1 less or equal to M less or equal to K, and at this mth stage we have the reverse inequality. This BM it's greater or equal to B minus epsilon. And because whenever B1 is less than B minus epsilon, आपके पास ये जो है ना, ये जो एलिमेंट्स आपके पास है B1 it's less than B minus epsilon, ये कहाँ तक है BM minus 1 तक. BM minus 1 तक सारे पॉइंट्स लेस देन B minus epsilon. तो जब आपके पास ये सिचुएशन होती है B1 लेस देन B minus epsilon, आपके पास एक इनइक्वालिटी आती है. अगर आपने कल के लेक्चर में देखा होगा, if B1 is less than B minus epsilon then we have this inequality C2 less than B1 less or equal to E2. तो इसी तरह से B2 भी है लेस देन B minus epsilon, तो इसके लिए आपके पास मिलेगा C3 लेस देन B2 लेस और इक्वल टू A3. तो ये चीज़ें आपको मिलेगी M minus 1 तक है. तो एट mth के लिए क्या होगा BM के लिए we don't know. एटलीस्ट CM लेस देन BM minus 1 लेस और इक्वल टू AM वो आपके पास होगा. इसको जब आप कंटिन्यू करोगे आपके पास आ जाएगा CM लेस देन BM minus 1 लेस और इक्वल टू AM. ये आपके पास
this. Now we will see this sum. We find this sum. We will show see that this sum is less than delta. And we also know that अगर आप के पास जो left continuity है, left continuity से आपको क्या मिला था? By applying the left continuity, we have this f of, by left continuity, okay, by left continuity we have f of a n, जो हमने ऑलरेडी लिखा है. अगर आप यहाँ पर फिर से इसको लिखोगे, f of a n minus f of x less than 2 power minus n into delta whenever this cn is less than x less or equal to, okay. अब जो आपके पास है ना, जो b1 पॉइंट है, b1 पॉइंट की प्रॉपर्टी क्या प्रॉपर्टी, b1 लाइज बिटवीन c2 एंड a2, ना, जो आपके पास पॉइंट b1 है. नाउ since ci plus 1 less than bi less or equal to ai plus 1 for I runs from 1 to m minus 1, ये आपके पास है. अब इसको जरा अप्लाई कीजिए x पर. आपके पास अब x की जगह पर bi है. So this means f of an minus f of, okay, so this it should be here ci plus 1. This one x is greater than c and less or equal to a. Now here bi, it's greater than ci plus 1 and less or equal to ai plus 1. So from this we conclude that f of ai plus 1 minus the point f of x, where x lies in this interval. So here it is f of bi. This thing is, ये लेट क्यों ज्वाइन कर रहे हैं लोग? One minute. Okay, so this thing is less than 2 power minus n. n की जगह पर आपके पास है I plus 1. and delta. ये क्लियर है? आप this f of ai plus 1 minus f of bi is less than 2 power minus times I plus 1 into delta. Now let's find this sum. Let's find this sum, summation. ये बार बार क्यों आ रहा है? मैं इसको एडमिट तो कर रहा हूँ, एडमिट ऑल. Okay. So this sum f of ai plus 1 minus f of bi, f of ai plus 1 minus f of bi, I runs from 1 to m minus 1, and this thing is true for I runs from, ये जो है ना, this is true for this one. It's true for I runs from 1 to m minus 1. Let's look at this sum, and this f of ai plus 1 minus f of bi, for this I varies from m1 to m minus 1. Here I is varying from 1 to m minus 1, and for that variation, but those values of I, we have f of ai plus 1 minus f of bi is less than 2 power minus I plus 1 delta. So this thing is less than summation, आप इसका नाम यहाँ पर स्टार रख सकते हो. It's less than summation I runs from 1 to m minus 1
2 power minus times I plus 1 into delta by star. Okay. नेक्स्ट पेज पर मैं आ जाऊं. हाँ सर. ओके. This is equal to delta times series I runs from 1 to that finite sum 2 power minus times I plus 1, and this is obviously less than delta times series n runs from 1 to infinity 2 power minus n. ओके. मैंने कुछ टर्म्स ऐड की है. अब यहाँ पर सम आई से स्टार्ट हो रहा है तो 2 पावर माइनस 2 से स्टार्ट हो रहा है. मैंने मगर 2 पावर माइनस 1 से स्टार्ट किया तो एटलीस्ट एक टर्म मैंने ऐड की, और एक ही टर्म मैंने ऐड नहीं की, मैंने एक्चुअली इन्फिनिटली मनी टर्म्स ऐड की, क्योंकि यहाँ पर सम था 2 पावर माइनस m तक, और मैंने 2 पावर माइनस m प्लस 1 भी लिया, 2 पावर माइनस m प्लस 2 भी लिया. वो सारी टर्म्स नॉन, एक्चुअली मैंने कुछ नॉन नेगेटिव टर्म्स इसमें ऐड की और ये इन्फिनाइट सीरीज आ गई. बट this one it is the geometric series with common ratio 1 by 2, and its sum is equal to the first term, that's 1 by 2 divided by 1 minus common ratio, and that's equal to delta into 1, which is delta. So thus we have f of ai plus 1 minus f of bi. This thing is less than delta. इसका नाम डबल स्टार रखिए. Now what's S? What's S actually? S is the infinite series. S is the series I runs from 1 to infinity, जो हमने नोटेशन दी है, f of bi minus f of ai. यही है ना S? This thing is greater or equal to summation I runs from 1 to m. मैं सिर्फ फाइनाइटली मनी, because they are all, each term is non-negative as f is monotonic increasing. तो अगर मैं कुछ टर्म्स रिमूव करूंगा ना यहाँ से, ये सम कम होगा ना, so this the resultant sum will be less or equal to the actual जो सम आपके पास है, जो ना पहला सम आपके पास है, the first sum. This one is the series because it has infinitely many terms. Now in this sum we have only finitely many terms. Okay. So this is true. f of bi minus f. अब मेरी कोशिश रहेगी ये, क्योंकि मैंने ये जो सम निकाला ना यहाँ पर, मैंने इस सम को, मैं इसको इसमें किस तरह से कन्वर्ट करूंगा. ओके. मैं f of ai plus 1 minus f of bi में इसको कन्वर्ट करूंगा. So what I will do, so let's first expand this sum. Okay, let's first expand this sum. f of b1 minus f of a1. Okay, this is the first term, plus f of b2 minus f of a2, then plus f of bm minus 1 minus f of am minus 1 plus f of bm minus f of a. और मुझे किस में कन्वर्ट करना है ये, इसमें f of a2 minus f of b1. Where is f of a2? f of a2 minus f of b1. f of a2 minus f of b1. Okay. So this is equal to f of a2. तो ये f of a1 जो है ना, f of a1 और f of bm, ये टर्म्स ऐसी ही रहेगी.
f of bm माइनस f of a1 को मैं ऐसी रखूंगा। अब यहाँ पर क्या है, आपके पास अब ये टर्म रहेगी माइनस टाइम्स f of a2 माइनस f of b1, ओके। देन अगेन माइनस टाइम्स f of a3 माइनस f of b2, क्योंकि यहाँ पर प्लस f of b2 है, इसके बाद माइनस f of, यहाँ पर जो नेक्स्ट टर्म होगी ना वो होगी f of b3 माइनस f of a3, तो वही मैं लिखूंगा माइनस टाइम्स f of a3 माइनस f of b2, देन माइनस नेक्स्ट टर्म होगी माइनस टाइम्स f of a3 minus f of b2, then minus, continue this, finally we have f of minus times f of am am, minus f of okay, it will be minus times f of am minus f of bm minus am minus 1. okay, this is equal to f of bm minus f of a1 जो कि पहली टर्म है, then this is your minus series I runs from 1 to m minus 1 f of ai plus 1 minus f of br, ये है ना, माइनस को बाहर निकाला, इट्स अ फाइनाइट सम, but this thing by double star it is less than delta, so minus times will be greater than minus delta, this is greater than f of bm minus f of a1 then minus delta, by double star. Now what is bm? Bm is greater than b minus epsilon. B, not yes, bm is greater than b minus epsilon. Bm is greater or equal to b minus epsilon. So f of bm must be greater or equal to f of b minus epsilon. This is greater or equal to f of b minus epsilon minus f of a1 minus delta, as this bm it is greater or equal to b minus epsilon, and f is an increasing function. Now this a1, a is less or equal to a1, a is less or equal to a1, so it means that f of a is less or equal to f of a1. So that which gives us that minus times f of a1 will be greater or equal to minus times f of a. So next page आपके पास अब ये है, आपके पास greater or equal to क्या था, ये b minus epsilon minus f of a1 and minus delta, ये है आपके पास। पहले मैं इसको यहाँ से मैं देख लूँगा ये क्या आ जाएगा, this a it is less or equal to a1, which means that f of a will be less or equal to f of a1, so that means minus times f of a minus times f of a1 is less or equal to minus times f of a, is minus times f of a. Okay, I want here minus f of a actually, huh? But it should be greater, huh? a1 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 b1 a2 b2, so obviously this is less or equal to a1, it can't be greater than a1. Oh no,
I'm wrong here. This A is not less or equal to, actually reverse difficulty is there. आपके पास ये सिचुएशन है, दिस इंटरवल AB is equal to union AN BN. So this means that our A1 must be less or equal to A, because interval A1 this semi-closed interval is a subset of the union of these semi-closed interval, which means that each semi-closed interval on this side, in particular A1 B1, must be contained in AB, है ना. आपके पास यहाँ से कोई सेट है A, इट्स इक्वल टू A1 यूनियन A2, सो दैट मीन A1 इज आल्सो सबसेट ऑफ A, A2 इज आल्सो सबसेट ऑफ A. यूनियन के जो दोनों सेट्स है ना वो सबसेट होगी यूनियन जो है आपके पास. तो ये जो सेट है A1 B1, इट इज ऑब्वियसली सबसेट ऑफ द यूनियन ऑफ द सेट्स, बट द यूनियन ऑफ सेट्स इज इक्वल टू द सेमी क्लोज्ड इंटरवल AB. So which means that this A1 belongs to this A1 belongs to this set A1. So A1 must be then less or equal to A1 A1 less or equal to A होगा, not A1 A is less or equal to A is less. Actually I think this A should be equal to A1, क्योंकि हमने इनको rearrange किया था ना. A1 should be equal to A. हाँ, हमने A1 लिया A के बराबर की. Why we are doing this? Why we are doing this? हमने लिया A1 equal to A. So this is equal to actually f of B minus epsilon minus f of A minus delta, as A is equal to A1. As A is equal to A1. Now function is continuous, left continuous, and it's left continuous at B, and B minus epsilon is less than B, so it's like this here, it's B minus epsilon. So whenever epsilon is approaching to 0, you are approaching to B from left actually. Okay, so epsilon approaching to 0 means that B minus epsilon is approaching to B from left. So whenever B minus epsilon is approaching to B from left, it means that the limit of B minus epsilon is equal to f of B, as epsilon approaching to 0. And delta is also arbitrary since epsilon and delta are arbitrary. So by left continuity of f at B, we must have this inequality. We must have this thing. What's this? Actually, S. Okay, S is greater or equal to f of B minus f of A. So by letting epsilon approach to 0 and delta approach to 0. So this S is greater or equal to it's number 2. By combining 1 and 2, we get S is equal to f of B minus f of A. तो यहाँ पर हमने एक्चुअली लेफ्ट कंटिन्यूटी का यूज किया है.
or epsilon delta, they are any positive real numbers. So we can take this epsilon approach to 0 and delta approach to 0. Okay, so therefore by combining 1 and 2, we get this f of b minus f of a is equal to s, and that's a summation and runs from 1 to infinity f of b n minus f of a n. So which means that this is actually mu of the semi-closed interval AB, and this is equal to summation n runs from 1 to infinity mu of the semi-closed interval B, this A and Bn, and this is actually the union of A and Bn. तो मैंने फिर से इसको कंप्लीट लिख दिया यहाँ पर, जो एक्चुअली आपको चाहिए था. इट इज सिग्मा एडिटिव. Okay, so therefore mu is sigma additive. Mu is sigma additive. Hence mu is a major. Hence mu is a major. तो इसकी मेजर की प्रॉपर्टीज हमने प्रूव की. अब इसका है nth डायमेंशनल एनालॉग. तो उसको करने के लिए हमें पहले दूसरा यूनिट इसका कंप्लीट करना पड़ेगा, सेकंड यूनिट. उसके बाद हम इसका n डायमेंशनल एनालॉग कर सकते हैं. So next we have a following theorem. We have the following theorem. Let S be a semi-ring. This is actually the characterization for the set function to be a major. So there is if and only if condition for a set function to be a major. That's theorem number 13.8 on elephants. Let S be a semi-ring. Let S be a semi-ring. Let S be a semi-ring and let mu be a set function. Mu from S to 0 to infinity, it's a set function. Be a set function. Then mu is major on S. Then this mu is a major on S if and only if mu satisfies the following conditions. Mu satisfies the following conditions. The condition 1 is mu of the empty set is 0, and the second condition is if A belongs to S, if he is a member of semi-ring, and we have a finite sets which are disjoint, and A1, A2, AN, they are all in S, they are also in S, satisfy union. इनका जो union होगा I runs from 1 to n, that is contained in A, that is subset of A, and they are also disjoint. They are also
they are also disjoint. I not equal to T. Then mu of, then this summation I runs from 1 to n mu of ai is less or equal to mu of a is less or equal to this holds. और एक कंडीशन है इसकी, तो अगर mu is major if and only if it satisfies this condition mu of the empty set is 0, and sets second condition that if A is a member of S and we have a finite disjoint sequence in S, A1, A2, An, with the condition that the union of these sets is contained in A and they are also disjoint sets, then this should hold. I runs from 1 to n, mu of ai is less or equal to mu of a. And the third one is third condition is that's actually sigma subadditive property. If A is in S and we have a sequence in S and An is a sequence in S, satisfy A is subset of union An and runs from 1 to infinity, satisfying this condition. Then mu of A is less or equal to summation n runs from 1 to infinity mu of an. That is mu is, इसको हम कहते हैं mu is this property is called sigma subadditive. Subadditive क्यों है ये? Less or equal to, अगर because it is true for any set A which is contained in the union. In particular, if A is equal to the union, suppose, then mu of the union is less or equal to the summation n runs from 1 to infinity mu of an. अगर ना A union के बराबर ही होगा क्योंकि वो भी सबसेट है ना यूनियन का, पर्टिकुलर केस अगर हम लिखिए तो mu of the union an n runs from 1 to infinity is less or equal to n runs from 1 to infinity mu of. Its subadditive means that it's the equality does not hold here. Subadditive, okay, it's not additive, subadditive. Sigma इसलिए है कि क्या आपके पास काउंटेबल कलेक्शन है an. तो ये तीन प्रॉपर्टी मेजर की होनी चाहिए. कन्वर्सली अगर ये मेजर कन्वर्सली किसी सेट फंक्शन की अगर ये तीन प्रॉपर्टीज होगी तो वो सेट फंक्शन जो होगी वो मेजर होगी. So first to assume that mu is a major. Assume that mu is a major. Then clearly by definition, okay, and clearly mu of the empty set is 0. That's the first property. You can say it's by definition, okay, here definition of major. It's the definition of major. So now we put the second property. What's second property? Let's take the sets. Let A belongs to S and A1, A2, An, they are also in S, such that this A is subset of the union I runs from 1 to n and they are also disjoint. This is given. And we show that mu of A is less or equal to summation I runs from 1 to n mu of ai. Mu of ai. So it's A is not subset.
union is subset. Okay, union is subset. Union I runs from 1 to n is contained in A, and now we show that the summation I runs from 1 to n mu of AI is less or equal to mu of E. Mu of union AI तो होगा ही less or equal to mu of A, that's true, but not cannot say that again. हाँ, यहाँ पर एक important point ये है, AI is disjoint है, AI क्या है, disjoint sets. अगर हम यहाँ पर क्या है म्यू अप्लाई कर सकते हैं दोनों साइड से, हाँ कर सकते हैं, मतलब मोनोटोन प्रॉपर्टी ऑफ, बिकॉज म्यू इज अ मेजर वी कैन अप्लाई द मोनोटोन प्रॉपर्टी ऑफ मेजर. मगर उसके लिए कंडीशन क्या है, उसके लिए कंडीशन है कि दोनों सेट्स एस के होने चाहिए. ए एस का मेंबर है बट दिस यूनिट इज नॉट द मेंबर ऑफ एस, सो वी कैन नॉट अप्लाई दैट. क्योंकि अगर हम सपोज अगर हम वो प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, सपोज अगर हमने मान लिया कि वो प्रॉपर्टी यहाँ पर, फिर तो कुछ करना ही नहीं है. आप लिख सकते हैं म्यू ऑफ यूनियन ए आई आई रन्स फ्रॉम 1 to n इज लेस और इक्वल टू म्यू ऑफ ए, बट म्यू ऑफ द यूनियन इज इक्वल टू समेशन because mu is a major and AIs are disjoint, so then we are nothing to do. So we cannot apply that because this union is not the member of S actually.